এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइरेट्स बांग्लादेश। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो मतलब मजा आएगा यार आपको देख के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत फिटफाट और जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे होंगे। बिल्कुल। तो आप हमें बताएं अपनी सेहत के बारे में कमेंट सेक्शन में, और हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की वीडियो के बारे में हमें बताएंगे अब्दुल नसर भाई कि आज की वीडियो हमारी किस बारे में है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। आज की वीडियो का हमारा टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टाइटल हमारी वीडियो का है स्टोरी ऑफ राइज इन बांग्लादेश 1971 टू 2018, यानी कि 2-3 साल पहले की बात तक। 1971 से लेके जब से ये आज़ाद हुए तब से लेके 2018 तक की ये रिपोर्ट है। फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, नॉट साउथ एशिया, नॉट एशिया या ऐसा वैसा, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो यही हम आपके साथ देखने वाले। आज के हमारे इससे पहले की वीडियो का भी जो कंटेंट था वो भी इसी तरह का था, इससे रिलेटेड ही था कि बांग्लादेश ने अपनी कैसे ग्रोथ की। लेकिन आज का हमारा एग्जैक्ट रिपोर्ट होगी 71 से लेकर 2018 तक, जो बिल्कुल पिन पॉइंट चीज़ें बताई जाएंगी, कितनी कितनी ग्रोथ हुई किस सेक्टर में। तो देखते हैं फिर आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। From a war-torn, ravaged nation on the brink to launching its own satellite in under 50 years, Bangladesh is the story of a nation that has pulled itself up from the ground to shoot for the very stars. The fire sparked by the vision of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation, united a country of a diverse people and creed in 1971 and continues to shine the path towards the country's future. এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Today, under the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh has adopted a long-term plan to transform the country into a knowledge-based middle-income economy by 2021. It also aspires to become a developed country by 2041, modeled after Bangabandhu's dream of a Sonar Bangla or Golden Bengal. Bangladesh has worked towards development from within, achieving, often ahead of time, all the Millennium Development Goals. Drawing inspiration from its success, the country is currently implementing the Sustainable Development Goals. 50% fewer people in Bangladesh live under the poverty line today than they did even 16 years ago. In the last 40 years, Bangladesh dramatically increased its food grain production, becoming the 4th largest producer of rice in the world and the 5th largest producer of fish. 2016 marks the 2nd consecutive year that the World Economic Forum ranked Bangladesh first in gender equality amongst South Asian nations. The same year, adult literacy in the country rose to a 12-year high, while net enrollment at primary schools jumped to over 98%. Life expectancy in Bangladesh is currently at 71.5 years, while infant and maternal mortality have both been significantly reduced. Since 2009, 14,000 community clinics have brought healthcare access door to door. Bangladesh has fulfilled all 3 criteria for graduation from LDC status this year and currently meets World Bank classification for middle income status. On the diplomatic front, it follows a policy of friendship to all and malice towards none. For 3 decades running, Bangladesh has been one of the biggest contributors to UN peacekeeping missions across the globe. From an agrarian economy in the 1970s, the Bangladeshi economy today is led by an export-oriented industrialization. The country is now the 2nd largest exporter of ready-made garments in the world. Keep up with the pace of the country's development, Bangladesh has embarked on constructing a number of mega infrastructural projects. Bangladesh's largest bridge, the Podda Bridge, is being built entirely with the country's own resources. It is projected to transform the lives of 30 million Bangladeshis through increased trade and connectivity.
Bangladesh's first nuclear power plant in Rupur is set to power 2.4 million homes by 2024. Since 2003, more than 4 million solar home systems have been installed nationwide. Bangladesh has the highest number of these solar home systems in the world. Since 2009, power generation has increased almost 4 times from under 5,000 megawatt to currently over 16,000 megawatt. The country's first deep-sea port, set to open in Pyra by 2030, is poised to considerably boost trade volume. Simultaneously, the Dhaka Metro Rail will ease congestion and pollution in the capital, carrying 60,000 passengers per hour. And with over 5,000 grassroots-level union digital centers delivering 6 million e-services a month, public services have been brought to every doorstep in rural Bangladesh. To boost foreign and local investments in the ICT industry, the country is also setting up 12 high-tech IT parks in 12 separate districts, aiming to raise ICT export to $5 billion by 2021 and create 10 million jobs. Additionally, more than 100 special economic zones by 2030 seek to create a further 10 million jobs and churn out products and services worth $40 billion. In 2016, Bangladesh was the second fastest growing major economy in the world. It was the 6th year that GDP growth was greater than 6%, and the momentum continued with 7.28% growth in 2017. Bangladesh has been named one of the next 11 countries having a high potential to become among the world's largest economies in the 21st century. A land of fertile soil and fertile possibilities, Bangladesh has leaped beyond what was once thought to be its potential. A country that is younger than 50 is about to enter the space age with the launch of its very first satellite, the Bangabandhu 1 satellite. Bangladesh's incredible growth and development is increasingly being acknowledged and lauded around the world, garnering praise from world leaders in many different forums. দল মত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আগামী প্রজন্ম পাবে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। Despite all that has been achieved, Bangladesh is not resting. Under the leadership of Sheikh Hasina, Bangladesh has bold and ambitious plans to reach even greater heights. Guided by Bangabandhu's vision of a Sonar Bangla or Golden Bengal, the future is bright for this youthful and energetic nation reaching for the very stars. बिल्कुल यार, ज़बरदस्त यार, देख के बहुत मज़ा आया। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले हम नहीं जानते थे और हमें जानने को मौका मिला इस वीडियो को देखने के बाद। जैसा कि इसमें इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो दुनिया की सबसे ज़्यादा चौथे नंबर पे चावल ग्रो करने वाला कंट्री अगर कोई है बांग्लादेश, 5-6 नंबर पे सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला, प्रोडक्शन करने वाला फ़िश के लिहाज से, और लिटरेसी रेट एडल्ट का 72% है। बहुत अच्छी बात है, जो कि एडल्ट आने वाली नस्ल जो यूथ है वो 72% पढ़ रही है, तो ये एक अच्छा नंबर है। पाकिस्तान का तो बहुत ही कम है इससे, पाकिस्तान में तकरीबन 60s या 50s पे कुछ इस तरह करके तकरीबन कह सकते हैं। हाँ, और बाकी अगर देखें जो इन्होंने ग्रोथ के हवाले से बताया, 100 इकनॉमिक जोन्स, इसके अलावा जो खुद से ये डीप सी पोर्ट बना रहे हैं, उसका नाम मुझे भी याद नहीं है, लेकिन 2030 तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा क्या गवादर वाला सीन है, गॉड गिफ्टेड है, पहले से गहरा है, लेकिन उसका फ़ायदा हम खुद नहीं उठा पा रहे। हम मतलब चाइना वहाँ से फ़ायदा उठा रहा है, जो लीज पे लेके उसको सारा खुद चलाएगा, सारी चीज़ें करेगा, लेकिन बांग्लादेश जो सारी चीज़ें खुद करेगा, उसका सारा मुनाफा, जो मेजोरिटी ऑफ द सिस्टम, सारा पैसा वो बांग्लादेश में रहेगा, बाहर नहीं जाने वाला। तो ज़ाहिर फ़ायदा होगा बांग्लादेश को, और ट्रेड एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन जाएगा इस खत्ते में, साउथ एशिया में। तो डेवलपमेंट में तो भाई जैसे मोहम्मद अहमद ने कहा कि टॉप पे आ जाएगा ये बड़े आराम से, लेकिन फर्स्ट पे आना इतना ईजी नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टाइम है। लेकिन अगर बहुत इसी तरह मेहनत करता रहा, इस तरह अपने मतलब मुल्क के साथ वो मुखलस रहे,
या इस तरह कौम मुखलस रही अपने मुल्क के साथ, तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आएगा, एक दिन आएगा। हमारी ज़िंदगी में तो शायद ये ना आए, लेकिन आने वाली नस्लों में अगर इसी तरह काम करता रहा तो इंशाल्लाह ताला ये आएगा ऊपर। हाँ, आ भी सकता है, इस तरह की ग्रोथ रेट है, क्योंकि अगर कंपटीशन ऊपर जाके बहुत टफ हो जाएगा। यहाँ पे तो है ठीक है, पाकिस्तान को क्रॉस कर दिया, बाकी कंट्रीज को क्रॉस कर दिया, यहाँ क्योंकि डामाडोल सी हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए ना वो बड़ा हैवी सीन है, जैसे इंडिया है, चाइना है, इसके अलावा फिलिपाइन भी बड़ा इस चीज़ में बहुत आगे जा रहा है, बड़ी स्पीड से जा रहा है, जापान है और यूके वगैरह है, इस तरह की बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका चाइना तो है ही हैं, लेकिन इस आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन टफ होता जाएगा, टफ होगा और पहुंच सकते हैं। टॉप 5 में आना कोई मुश्किल नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन फर्स्ट पे आने के लिए सही दौड़ लगानी पड़ेगी, मसल्स को टाइट करना पड़ेगा, और वो करता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश। अब देखते हैं इनसे आगे आने वाले विजनरी लीडर कौन होंगे इनके होने के बाद, क्योंकि एक वक्त है ना हर इंसान का, तो अभी एज इनकी पता नहीं कितनी, शेख हसीना की, अल्लाह इनको जिंदगी दे। मेरा ख्याल है एक एस्टिमेट आप मिड सेक्शन में बताएं, मैं गैस करता हूँ कि इनकी एज तकरीबन ना 70 नहीं, मुझे लगता है 60 प्लस है। 60 प्लस तो है, लेकिन एग्जैक्ट 100% जो है ना वो 70 के लगभग है तकरीबन, मतलब 76 से लेके ना, ओ सॉरी 66 से लेके और 70 तक होगी। एग्जैक्ट है, मुझे लग रहा है। अब एग्जैक्ट बता। अब एग्जैक्ट अगर बताऊं तो 68, मैं कहता हूँ 62 है। तो मुझे ऐसा लगता है मिड सेक्शन में अगर आपको पता है, बाकी हम इसके अल्लाह इनको जिंदगी दे, इनको ऐसे काम करते हुए रखे, जारी रखे, और फायदा लोग इनसे उठाएं, और ऐसे विजनरी लीडर बांग्लादेश को आगे भी मिलें। ये चीज़ अच्छी लगती है देख के यार, जैसे अब हमारे बड़े होते हैं ना, तो मुझे ये चीज़ वाकई में बड़ी बुरी लगती है, इस लिहाज से कि जब हमारे बड़े थोड़े होते हैं तो हम कहते हैं उनको हम फ्री करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बजाय इसके कि हम उनको और काम करवाएं। हम वाकई में उस सिस्टम से उनको फ्री कर दें, उनको ये टेंशन ना हो ये काम कैसे होगा, लेकिन वो काम करते रहें अपनी मर्जी का। ये नहीं कि वो बिस्तर पर बैठ के हुक्का चाटते रहे, शाम को बैठ के शाम को मतलब डिबेट कर लें सियासत पे, और सो जाएं खाना खा के, सुबह उठ के फिर लस्सी से नाश्ता किया और फिर हुक्का पिया और शाम को दोबारा बैठ गए। ये बड़ी रूटीन जो है वो नामुनासिब सी है। हाँ, कभी कभी घूमने जाता है बंदा तो ठीक है, लेकिन अपनी मनपसंद जो अपने फेवरेट काम है, किसी का पौधे लगाना होता है, किसी का ये काम करना, सजाना, ऐसे करना, उसका प्रॉपर अच्छा वाला बिजनेस कर सकता है। लेकिन हर बंदे का काम नहीं, ये भी हम समझते हैं, हर बंदे का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये है कि बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बीमारियां बढ़ती हैं, उससे एज में जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। ज़िंदगी अल्लाह देने वाला है, लेकिन आप अगर करतूतें ऐसी करेंगे, सारा दिन बैठे रहेंगे खा पी के, तो ज़ाहिर बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, आपको आवाज़ारी रहेगी, आप लड़ेंगे लोगों से, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसी के बदले में अगर आप काम करेंगे जैसे ये कर रही हैं, तो क्या, जब ये इतने कंट्री चला सकती हैं, तो हम कैसे कहते हैं हमारे माँ बाप जो है वो एक घर नहीं चला सकते? हम बेशक अपनी जिम्मेदारी लें, सारे यूथ है हर कंट्री की, हर पूरी दुनिया में, लेकिन उनको फ्री ना करें बिल्कुल मेरे ख्याल से, ताकि वो इन्जॉय करें अपनी ज़िंदगी को उस तरह, और देखें कि असल में जब बिल्कुल फ्री रह के कैसे काम किया जाता है। ज़माना अरसा हो गया उनको फ्री रह के काम किए हुए, जब जिम्मेदारी आ जाती है फिर और सीन होता है। बिल्कुल, तो जब जिम्मेदारी से फ्री होकर काम करेंगे उनको भी काम करने का मज़ा आएगा, अपना मनपसंद काम। तो लास्ट में आपने बतानी है इनकी एज, कमेंट सेक्शन में क्या इनकी एज है, तो इंशाल्लाह फिर हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।